Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Harinam Sankirtan ki Jai, Jagat Purush Srila Prabhupada ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Shri Hari Bol, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Thank you, Pabhuji. I'd like to welcome this Gita study. सभी भक्तों का स्वागत शनिवार दिन हमसे बड़े विषय है कि हम सबको साथ मिल करके गीता के एक श्लोक पर श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है शुक्रवार दिवस पर. And today we have with us Krishna. And whenever we get his association, become very, very pleased. तो जब भी प्रभु जी का संग मिलता है, संता का अनुभव होता है. इतने वर्ष प्रभु जी इतने स्तर भाव से सेवा करते हैं. For so many years after year, you can see that how the entire family, Prabhu ji, very humbly serving the mission of Sripad, completely did it without any self-motive. बिना स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा करने की जब में तो कह सकते हैं कि वो निश्चित उनके ऊपर गुरुजन और भगवान की भी कृपा है. If someone is entering in the path and doing the selfless service mission of Srila Prabhupada, it means that person has been definitely favored by the master in the Lord. और ऐसे बहुत कम भक्त हमें मिलते हैं. सेवा बहुत लोग हैं लेकिन निस्वार्थ से करने वाले भक्त कम हैं. तो ऐसे भक्तों का जब प्राप्त हो किसी भी हमसे श्रवण के हमसे कीर्तन हमसे किस माध्यम से संग प्राप्त हो तो ये हम सब परम से होता है. So very, very fortunate to have Pabhuji's session today. और सब मिल Pabhuji का स्वागत करेंगे. All together welcome Pabhuji by chanting one time Hare mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, brother. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Nashtaprayasu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavate uttama sloke bhaktir bhavati naistaki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopak kumaraya govindaya namo namaha. Hare Krishna. We welcome all the devotees for our weekly Saturday satsang. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, entitled The Most Confidential Knowledge, text number 19. So,
तो आज हम सब 9वें अध्याय के ज्ञान के श्रवण करेंगे। तपामि अहम अहम वर्षम निघ्नामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च सत् असत् चाहम अर्जुना। तपामि अहम अहम वर्षम निघ्नामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च सत् असत् चाहम अर्जुना। तपामि अहम अहम वर्षम निघ्नामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च सत् असत् चाहम अर्जुना। तपामि give heat, aham I, varsam rain, nikhrnami withhold, utsrajami send forth, cha and amritam immortality, cha and eva certainly, mrityuhu death, cha and sat spirit, asat matter, cha and aham I, Arjuna, O Arjuna. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation: O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. Purport: Krishna, by his different energies, diffuses heat and light through the agency of electricity and the sun. During the summer season, it is Krishna who checks rain from falling from the sky, and then during the rainy season, he gives unceasing torrents of rain. The energy which sustains us by prolonging the duration of our life is Krishna, and Krishna meets us at the end as death. By analyzing all these different energies of Krishna, one can ascertain that for Krishna, there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit. In the advanced stage of Krishna consciousness, one therefore makes no such distinctions. He sees only Krishna in everything. Since Krishna is both matter and spirit, the gigantic universal form comprising all material manifestation is also Krishna, and his pastimes in Vrindavana as 200 Syamasundara playing on a flute are those of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य श्लोक। हे मैं ताप प्रदाता हूँ, कृष्ण जी, आपकी आवाज कट रही है प्रभु, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है प्रभु जी, साफ नहीं आ रही। अभी बताइएगा प्रभु जी। हाँ, अभी साफ अभी ठीक है प्रभु, अभी ठीक है। ओके। तो अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अध्याय 9:19 श्लोक संख्या 19। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं। तात्पर्य: कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों में हैं।
अतः कृष्ण भावना अमृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों में है। अतः समस्त जगतों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करने वाले श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना प्रभु जी मेरी। शलाकया। हरे कृष्ण प्रभु। ओके प्रभु, प्लीज प्रभु जी, आई एम डन प्रभु, प्लीज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सगगण रघुनाथान् विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we are reading the chapter number 9 entitled The Most Confidential Knowledge, text number 19. So here, yes bro. हम सब 9वें अध्याय जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान के 19वें श्लोक पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं आज। So this chapter is called The Most Confidential Knowledge. इस अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। Why this is most confidential knowledge is Krishna is revealing here how the unalloyed devotional service has to be performed and who are all doing, how to do it, and all the confidential, most confidential knowledge is revealed in this chapter. तो क्यों उसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कैवल्य जो अनन्य भक्ति हैं, जो अमिश्रित भक्ति हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा होने जा रही है और कैसे करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर ये ज्ञान दिया जाएगा। इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। When Krishna starting this chapter, in the first sloka, Krishna is telling that, oh my dear Arjuna, I am telling this most confidential knowledge to you because you are my friend and you are non-envious to me. और भगवान श्री कृष्ण ने इसके अध्याय के शुरुआत में ही बोला कि अर्जुन, मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप मेरे मित्र, मेरे भक्त हैं, और दूसरे आप अनुसूय, आपके अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। So, in order to understand this most confidential knowledge, this is the criteria. We should not become envious towards Krishna, and we have to follow the footsteps of Arjuna. Then this knowledge will be revealed to us also. तो ये एक योग्यता यहाँ पर बताई जा रही है कि इस ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए सबसे पहले तो हमें किसी के भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, और भगवान से मैत्री भाव, उनके भक्ति भाव का अगर भाव अर्जुन जैसे होगा, तब जाकर के हम ये ज्ञान समझ पाएंगे। So in the second sloka, Krishna is explaining about this Raja Vitya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksavahamam Dharmyam Susukam Kartum Abhyayam.
this first 1, 2 and 3 slokas is glorifying the contents of this verses. तो शुरुआत के जो 1-2 श्लोक हैं यहाँ पर, 2-3 श्लोक शुरुआत के, वो बताते हैं कि किस प्रकार से ये ज्ञान जो है वो कैसे इसको सुसुखम होता है और कैसे इस ज्ञान का जो क्या विषय वस्तु है उसके बारे में वहां पर बताया जा रहा है. So this word pratyaksha vagamam is very important word. So by this by direct experience one can able to understand the greatness of the devotional service. तो यहाँ पर बताया गया प्रत्यक्ष अवगमम. इसका मतलब इस ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से समझा गया है और प्रत्यक्ष अनुभव से इसको भक्तगण आगे समझेंगे. This knowledge is the king of all knowledge, and this is the secret, high king of all the secret, confidential knowledge, this knowledge. और ये राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, और राज गुह्यम गोपनीय ज्ञान जो है उनका राजा है. So this knowledge, if one is not faithful, he cannot able to understand this knowledge. तो अगर कोई श्रद्धावान नहीं है तो इस ज्ञान को, ये परम गुह्य ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे. So in this way, Krishna is telling about the glories of this knowledge, and then he's explaining one by one, sloka after sloka, that how Krishna is pervading all everything we are discussing in the previous weeks. तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस ज्ञान की पहले महत्ता को बता रहे हैं, इसके लक्षणों को बता रहे हैं, और हम लोग पिछले कई सप्ताह से एक श्लोकों का यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं इसी परम गुह्य ज्ञान के इस अध्याय के. So in the 7th chapter also, more or less similar thematic messages are given by Krishna. However, Krishna says that this chapter 9 is the most confidential knowledge, because here this unalloyed devotional service is explained, detailed. तो इसके पहले 7वें अध्याय में भी, 7वां अध्याय इससे काफी मिलता जुलता है 9वें अध्याय से, उसी प्रकार का वहां पर भी क्रम हम देखते हैं, वहां पर मिलता है उसी प्रकार के विषय वस्तु. लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय को परम गुह्य ज्ञान हम देख रहे हैं, इसको परम गुह्य ज्ञान बताया गया. So in the text 15, Krishna is explaining about how like jnana yajnena chapi anye yajanto mam upasate ekatvena pratatvena bahuda visvato mukham. Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without second, as diverse in many and in the universal form. There are 3 kinds of worship is explained in text number 15. तो 15वें श्लोक में यहाँ पर बताया गया कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं. तो यहाँ पर एकत्वेन, पृथक्वेन और बहुधा विशतो मुखम, अर्थात 3 प्रकार के ये कोटियों का वर्णन हुआ है जिनको निम्न स्तर माना गया है. Yeah, Prabhupada explained in the purport, he mentioned the first type, he who worships himself as one with the Supreme Lord, is the first kind of devotee. इन कोटियों में पहले वो हैं जो परमेश्वर तथा अपने को एक मान करके पूजा करने वाले हैं. The second one, he who concocts some form of the Supreme Lord and worships that. और दूसरे जो हैं वो पृथक जो हैं वो परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले हैं. So the third one, he who accepts the universal form, the Viswarupa of the Supreme Personality of Godhead and worships that. और तीसरे जो श्रेणी बताई गई यहाँ पर कोटि, वो है विशतो मुखम, अर्थात भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले. So in the text 16, 17 and 18 and 19 all talks about how one can give the methods to worship the universal form of the Lord. और उसके पश्चात ये 3 कोटि बताने के पश्चात जो आगे के 16, 17, 18, 19 श्लोक हैं, इसमें वो विशतो मुखम की उपासना कैसे करते हैं उनका थोड़ा विस्तार में वर्णन किया गया है.
So in the text 16, Krishna says, but it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the health, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. जैसे कि 16वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान की, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं. In the text 17, Krishna says, I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am also the Rig, the Sama, and the Yajur Vedas. और आगे कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं. मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं. मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं. And in the 18th text, Krishna says, I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place, and the eternal seed. और आगे कहते हैं फिर भगवान कि मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं. मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं. So now the 19th sloka, today's sloka, Tapami aham aham varsam nikhnami utsujami cha amrutam chaiva mrityuscha satasat chaham Arjuna. O Arjuna, I give heed and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. और आज के श्लोक में बता रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं, वर्षा को रोकता हूं, फैलाता हूं. मैं अमृत हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं. आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं. So Prabhupada writes in his purport, Krishna by his different energies diffuses heat and light through the agency of electricity and the sun. प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं. So this is the speciality of Srila Prabhupada in modern times, how people can understand. For that way Prabhupada is giving purport. Prabhupada is saying that the word electricity, how the heat and light through the agency of electricity and the sun diffuses all over the world. तो प्रभुपाद जी की महानता है, देखिए ये उनकी विशेष यहाँ पर इनका योगदान है कि प्रभुपाद जी उसको बहुत हमारे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोई चीज बताते हैं. जैसे पर कहा जाए कि सूर्य से हमें ताप मिलती है या सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो आजकल लोग बोलेंगे कि अभी तो हम लोग सब लोग रात दिन काम करते हैं और सब कुछ विद्युत से आता है, सब कुछ विद्युत से हमको देखता है, इलेक्ट्रिसिटी से. तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान की शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं. क्योंकि विद्युत भी किससे बन रहा है? वो निश्चित रूप से या तो जल से और या तो सूर्य की रोशनी से. तो इस प्रकार से, या जितने भी जो कोयले से बनाते हैं, वो भी सारे जो रॉ मटेरियल है उसका सोर्स वो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त शक्ति के द्वारा ही वो प्रकट होता है. तो प्रभुपाद जी इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि विद्युत और सूर्य ये दोनों भगवान की शक्तियों की ही प्राकट्य है. Either heat or light, both comes from this different energies from the Krishna. Srila Prabhupada gives another example that in electricity we get air conditioning also, cooling also. The same electricity we get the heating also. Heating, maybe in Gulf countries we are not using much for our room heating and other thing. In the cold countries like Europe, they have the system that in the summertime they use as a cooling, and the winter time they make use of the same electricity for heating the rooms and every other stuff.
तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि किस प्रकार से एक ही विद्युत से जो दोनों प्रकार की क्रियाएं हम कर सकते हैं, या तो ठंड प्रदान करने के लिए जैसे वातानुकूलित यंत्र जो होते हैं, या तो फिर गर्मी, जैसे बहुत ठंडी जगह है जैसे यूरोप वगैरह, वहां पर तो वहां पर हीटर के लिए जो गर्मी पैदा करते हैं वो भी विद्युत से ही आती है। तो एक ही विद्युत है, उससे दोनों ही कार्य किए जा सकते हैं। So during the summer season, it is Krishna who checks rain from falling from the sky, and then during the rainy season, he gives unceasing torrents of rain. आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। So as a devotee, we understand that there are so many Brahmandas are there, all are floating in the universes, and everything is held by the Krishna, by Krishna's energy. All are floating without any collision, and properly, every planets, every universes are stationed. And for doing such a great personality, holding this rain during summer time and giving in the rainy season is not very difficult task for Krishna. तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, कि किस प्रकार से इसको गर्मी ऋतु में इसको जल को नहीं देना, वाष्पित करना, और जाड़े में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कई बार लोग जो है इस प्रकार की क्रियाएं कर पाते हैं लोग, और भौतिक रूप से भी नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं आजकल, जो है ये कृत्रिम रूप से बरसात करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ कुछ स्थानों पर, लेकिन भगवान के लिए पूरे सृष्टि में ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। So in the Brahma Samhita, Lord Brahma glorifies about Krishna, how Krishna is so great that, like for all the universes are coming to the existence for his one exhaling, and everything is going back to Krishna again in one inhaling. तो कैसे सुंदर रूप से बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि जो महान विष्णु हैं उनके केवल एक श्वास छोड़ते ही ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर प्रकट होते हैं, और एक श्वास जब श्वास को अंदर लेते हैं, सारे के सारे ये जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो उनमें प्रवेश कर जाते हैं, और ऐसे महान विष्णु वो भगवान कृष्ण के एक अंश मात्र हैं। So that Krishna is so merciful that he accommodated every one of the jivas, helping them to come back to him his own abode. Why? Like for even doing the devotional service also, even this is the most confidential knowledge, worshipping this Krishna in a 200 Syamasundara form is the best, is the ultimate one. However, Krishna is giving opportunity to all other people also, impersonalists, in this the Vishwa, those who are worshipping in this Vishwarupa form, any form, he's giving opportunity to, even for the demigod worship also, Krishna is saying, I am only strengthening their faith, but however, that is not an intelligent way. So Krishna is accommodate every jivas to come back to his, gradually they have to attain their real constitutional position in his abode. तो भगवान श्री कृष्ण चूंकि सभी के सुहित हैं और सभी को वो अवसर देते हैं कि किस प्रकार से वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में विराजमान हो और कैसे वो भगवत धाम वापस जाएं, इसलिए भगवान सबके लिए अवसर दे रहे हैं। और विशेष रूप से जो भौतिक जगत में आए हैं, तो भौतिक जगत में कैसे भौतिक विषय वस्तुओं को देख करके ये पूरा जो भी हम लोग वर्णन सुन रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से विशुद्धोमुखम के बारे में, ये सभी भौतिक परिप्रेक्ष्य में जो हमें देखने वाली चीजें हैं जिसको हम अनुभूति कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी कैसे हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और अंततः क्रमशः हम ऊपर की चेतना में और अंततः कृष्ण धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान सभी को ये अवसर देना चाहते हैं, ये उनकी करुणा और उनकी दयालुता का प्रतीक है। So in his opulences, he says that,
you know, I am the taste of water. You know, like Brahma is praying, Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadir Adir Govindam, Sarva Karana Karanam. You cannot able to understand me as a Sachidananda Vigraha, personal form. At least you are every day drinking water, you know, that taste is knowing. So in this way, you gradually you develop, is giving an opportunity to all the jivas. इस प्रकार करके हमारे इनको के वो सहाय पड़ते हैं। Prabhuji, again your voice is breaking, maybe for me or others. I'm getting some signal problem, but now it's okay. It's okay, Prabhuji? Now it is okay, Prabhuji. Now it is okay, Prabhuji. Okay. So Prabhupada further says, the energy which sustains us by prolonging the duration of our life is Krishna, and Krishna meets us at the end as death. So as long as the life is with us, the prolonging, that duration of the life is Krishna is giving. You know, it's Krishna's mercy. We are sustaining our life, and the duration of life is given by Krishna. And at the same time, when we are leaving this, Krishna is come as a death. भगवान कहते हैं आगे कि जो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। तो भगवान की ही कृपा से जो जीवात्मा, जो चेतन शक्ति है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, और अंत में भगवान के ही द्वारा प्रदत्त होकर के वो उनके जो मृत्यु रूपी जब उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो उस समय भी ये भगवान की कृपा से, उनकी शक्ति के द्वारा ये कार्य संपादित होता है। तो उस रूप में भी कृष्ण ही मिलते हैं। तो कृष्ण says that again, देहिनाम यदा देहे गौमारम यवनम जरा तदा देहांतर प्राप्ति धीरास तत्र न मुह्यते. So the sober person is not bewildered by changing his body, like how you know, the embodied soul from a boyhood to youth to old age. Similarly, you know, at the time of death, is going to the takes another body. So for this process, you know, the sober person is does not bewilder, but other people all generally all are afraid of the death because they don't know what it is. तो कैसे गीता में हम देखते हैं, दूसरे अध्याय में बताते हैं भगवान कि किस प्रकार से एक जीवात्मा कैसे इसी शरीर में बचपन में बाल्यकाल से वो आगे बढ़ते हुए फिर युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार से देहांतर जब ये आत्मा शरीर भेद को, जो धीर पुरुष हैं उनको कभी भी इस स्थिति से विचलित नहीं होते, यहाँ तक कि मृत्यु आने पर भी वो विचलित नहीं होते, जानते हुए कि वे केवल देह का स्थानांतरण है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो नानुपश्यन्ति मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं, वो नहीं देख पाते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो विचलित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। So the science of the modern science says that the value of this body is like somewhere around 100 or 120 rupees per human being's body. जैसे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने पुस्तक में किस प्रकार से एक मनुष्य, वो पहले की बात होती है, अभी कुछ बढ़ गया होगा दाम, तो जितने हमारे केमिकल कंपोजिशन अगर निकाला जाए एक शरीर का, मृत्यु शरीर का देह जो है, तो उसमें सब मिला करके जितने भी तत्व हैं उसकी कीमत
150 120 रुपए के आसपास लोग बता रहे हैं, इतनी कीमत आती है। So Prabhupada says that even though this body is like that, best use of the bad bargain, with this body we can achieve the greatest achievement during when this within this body. प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारी है, लेकिन इसमें भी ये विषम स्थिति में भी हम इसको सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं शरीर का, अगर जब तक इसमें चेतना, जब तक आत्मा का प्रवेश है, इसी मनुष्य देह से हम सबसे उच्च वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. So out of many people are endeavoring in the transcendentalist, only very rare person out of many people, only very rare people knows that Vasudevam Sarvamiti, Krishna is everything. But by the mercy of Srila Prabhupada and our Guru Parampara, we understand from the day one when we are coming in contact with the devotees, when we are associating with our movement, we received the teaching that we are not this body, we are the spirit soul, and like Krishna is the supreme personality of Godhead. So even in our movement, any child, anyone asks that, who is Krishna, then they will say immediately, Krishna is the supreme personality of Godhead. So that much, like Vasudeva Sa Mahatma Sudurlabhaga, the rarest thing we attain very easily by the mercy of Srila Prabhupada and his sincere disciples and the movement, senior devotees. तो देखिए यहाँ पर बताया गया भगवद गीता में ही कि जो बहुत जन्मों के पश्चात बहुत ये जो ज्ञानी जन हैं, जो वास्तविक ज्ञान ग्रहण करते हैं, और कई जन्मों के पश्चात, बहुत जन्मों के बाद ये समझ पाते हैं कि वासुदेव कृष्ण वही सर्वे सर्वा हैं, वही सभी कारणों के कारण हैं, और उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उनको महात्मा कहा गया। तो प्रभु बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो कई जन्मों के पश्चात जो वस्तु प्राप्त होने वाली है बहुत दुर्लभ लोगों को, प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके अनुयायियों की कृपा से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ में प्रथम दिन से ही, चाहे कोई भी हो, बालक हो या वृद्ध हो, प्रथम दिन से ही हमको ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर परमः कृष्ण, की भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, वो सर्वोपरि हैं। इसका अर्थ है कि सभी को महात्मा बनने का अवसर प्रथम दिन से ही दिया जाता है यहाँ पर। So I remember one story that there is one devotee of Lord Shiva, and he is in a very difficult situation, and Lord Shiva is the master of this material world. He feeds everybody, he takes care of every jivas, and he is taking care of this person also. But somehow or other, he's having a lot of difficulties in his life. So by seeing his condition, Mother Parvati asks Lord Shiva, see, he's your devotee, and you are feeding everybody, you are taking care of everyone. But look at this jiva, he is struggling so much. Why don't you do something for him? Like that, Mother Parvati asked Lord Shiva. तो एक कथा आती है कि शिव जी के एक भक्त थे। शिव जी इस भौतिक जगत के नियंता माने जाते हैं। वो जो यहाँ के जो दुर्गा जो महामाया है, उनके पति हैं। तो उन्होंने एक बार, उनके एक तो उपासक थे, शिव जी के उपासक, तो बड़े निर्धन थे। तो उनको देख करके पार्वती जी बोले कि देखिए, ये तो आपका भक्त है, आपका उपासक है, और क्यों इतना निर्धन है, आप कुछ क्यों आप उसका देखभाल नहीं करते हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला। So Lord Shiva tells that, I'm giving him so much opportunity, but he is not utilizing it. What can I do? शिव ने कहा कि मैं उसको बहुत अवसर देता हूं, लेकिन उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। So Mother asked that, give him one more chance. Let me see, how he is not using.
पार्वती ने बोला कि ठीक है, एक अवसर उसको और दीजिए, मैं देखती हूँ कैसे वो नहीं उसको उपयोग करता है। So Lord Shiva arranged that, he gave one nice fruit. He kept all the valuable jewels, everything inside that one, and he's arranging to hand over this one. You relish this fruit, like that. He's giving, and he gave to that person. तो शिव जी ने क्या किया कि ठीक बोला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक फल के अंदर सभी स्वर्ण आभूषण जितने रत्न थे वो सब भर करके, और वो फल को उस व्यक्ति को देने का प्रबंध करने लगे शिव जी। So this person, he took that fruit, and he didn't even think that we will relish this fruit. He take this one, and he go to the one seller, and he sell this fruit for 5 rupees. He sell. How much you will give? Then they said 5 rupees. Okay, he collect 5 rupees, and he sell that the most valuable jewels, everything. Like he sold that one. तो शिव जी जब उनको वो जो फल था उसको प्रदान करने के बाद उनको प्रदान हो गया, मिल गया उनको, तो उनको लगा कि ठीक है, अब ये आ गया है तो मैं इसको बेच के कुछ धन कमाऊंगा। बजाय उस फल को आस्वादन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मैं इसको बेच करके कुछ धन आएगा, धन से हमारा काम हो जाएगा। तो गए वो बाजार में, और बाजार में उसको 5 रुपए में उस फल को बेच दिया सब्जी वाले को, फल वाले को। The value what Lord Shiva gives, maybe millions and millions of value, maybe dinar or dollar, or maybe it's more than that. But this poor man, he do not have any intelligence, he do not have any fortune. Then he immediately go and sell those things. तो हो सकता है कि देखिए जो उसमें था वो स्वर्ण आभूषण, वो बहुत, प्रभु जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिलियन दिनार के आसपास हो सकता है और भी ज्यादा। लेकिन वो इतना मूर्ख व्यक्ति था कि उसने क्या किया, उसने सोचा नहीं कि ये विशेष फल है, और उन्होंने क्या किया कि बस पैसे के लिए लालच में, कुछ पैसों को लालच में फल को बेच दिया 5 रुपए। So why I'm telling this story is here that we, the jivas, we never know, we don't understand how many lifetimes we are transmigrating from one body to another body, one universe to another universe, and in a different planetary system. We are this 84 lakhs yonis. We are traveling so many times, so many years, time immemorial of we are traversing in one species to another species. प्रभु जी कह रहे हैं कि क्यों मैं इस कथा बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप, हम लोग कितने अनादिकाल से अलग अलग 84 लाख योनियों में, कभी ऊपर कभी नीचे कभी मध्य में भ्रमण करते जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभवों का अनुभव करते जा रहे हैं, कभी सुख कभी दुख, या इस प्रकार की यातनाएं, और अनादिकाल से ये चक्र चल रहा है। So why Srimati Radharani's mercy, like she also wants to take us back. He is asking Krishna, do something for these jivas. They are rotting in this material world, and Krishna sends Srila Prabhupada and our acharyas, and make among the vast Vedas, the jivas cannot able to understand all these things. They make it in a very condensed form of things, and make very nice, like Srila by Prabhupada, he make this Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, and all other books which is required to do our devotional service and get out of this material world. This entire package he made and he gave, and we purchase and we keep it in our home, and we are not reading. So what is the difference between us and that unfortunate person? प्रभु जी बहुत अच्छे से बताया कि उसी प्रकार हम लोग भी अनादिकाल से यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम लोग यातनाएं झेल रहे हैं, और राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलती है कि देखिए आपके ये जो आपके अंश हैं इस प्रकार से कष्ट में हैं। तो भगवान जो है श्री प्रभुपाद के ऐसे महान आचार्य को यहाँ पर भेजते हैं, जो हमें सब कुछ, सारे जो शास्त्र रूपी, जो शास्त्र के जो ज्वेल्स, जो मणि हैं, सभी सिद्धांतों के जो रत्न हैं,
उसको कृष्ण भावना भावित रत्न के रूप में हमको बिल्कुल अच्छे रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं उनके शास्त्रों के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, और उसको भी हम ला करके उसी प्रकार से हमको मिलने के पश्चात उसको ला के हम केवल रख रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका आस्वादन नहीं कर रहे हैं। हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से है जैसे वो उस व्यक्ति को जो फल मिला है और वो मूर्ख व्यक्ति उसको जाके बेच देता है, उस फल का आस्वादन नहीं करता है। तो हमारी स्थिति भी उसी प्रकार से हो गई है। There are many jivas in this material world. They are doing so many tapasyas and so many hard works, but they are all in the wrong place. तो बहुत से जीव हैं जो इतना श्रम कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, लेकिन वो गलत स्थान पर हैं। So, by the mercy of Srila Prabhupada and our previous acharyas and our Gurujan, we are in the right place and we are in the right time. Like just 500 years ago, Chaitanya Mahaprabhu came and he freely distributed this Harinam. We are in the right time and right place. Everything, the whole package is given to us. We no need to go here and there to search. Nothing we have to do. Simply we have to make our life regulated and follow. There are so many devotees are available. Prabhupada mercy, wherever we go, we are having the opportunity of the association with the devotees. In collaboration with all the devotees, we submit ourselves to them and we simply serve them nicely in Krishna conscious movement. Everything will be revealed to us. So very easily we can get out of this material world, and then we can achieve our constitutional position. The same amount of energy spent by other jivas, because they are not in the right place, because they are not in the right guidance, because they are not studying the right scripture, they are struggling. The same amount of effort, if we put, there is certain, we will achieve our destination. तो ये बता रहे हैं कि बहुत से लोग जो अलग स्थानों पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चूंकि वो सही स्थान पर नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से बिल्कुल सही स्थान पर, जहां पर सर्व परिष्कृत, सर्वोपरि शुद्ध भक्ति का ज्ञान, भक्ति की विधि का प्रसार हो रहा है, वहां पर हम हैं और बिल्कुल सही समय पर हैं कि ये बिल्कुल स्वर्ण युग चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ वर्ष पहले ही आकर के अपनी लीला समाप्त करके गए और उनके जो अनुयायी गण हैं, प्रभुपाद जी कहते अभियान में अभी भी लीला ये चल रही है, स्वर्ण युग का समय चल रहा है। इसमें जो भी इस विधि को अपनाएंगे बड़ी सहजता के साथ में, उनको सर्वोपरि वस्तु प्राप्त होगी, सार शिरोमणि वो वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन जो अन्य लोग हैं जो स्थान पर नहीं हैं या सही समय पर नहीं है, कह लीजिए आप अभी नहीं आए या बाद में, तो वो लोग भी हो सकता है कि बहुत जगह पर बहुत से मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन चूंकि स्थान सही नहीं है और वहां पर वो कृपा नहीं, जहां पर सही नहीं है वहां पर वो उनको वस्तु प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर रह के भी अगर हम लोग गंभीर नहीं हैं और इस गंभीरता को नहीं समझते हैं कि किसने उचित स्थान पर रह के, उचित समय पर रह के हमारे पास ये पूर्ण अवसर हमारे पास में है इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से वास्तव वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो हमको कभी भी इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। Prabhupada writes in his purport, continuing, by analyzing all these different energies of Krishna, one can ascertain that for Krishna, there is no distinction between matter and spirit. Or in other words, he is both matter and spirit. So Krishna is everything. Krishna is everything. By analyzing all these things, we can understand that there is everything is Krishna. Krishna himself says in Bhagavad Gita 10.8, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravatete iti matva bhajante mam bhuta bhava samanvidaga. The material world, the spiritual world, everything is emanating from me. One who understands this thing, the intelligent person, he is doing service unto me. Bhuta bhava samanvidaga. तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि
कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है और ये चेतना की परिपक्वता की ये पराकाष्ठा है। परिपक्व अवस्था में भक्त वो देखना शुरू करते हैं कि भगवान हर जगह पर व्याप्त हैं। उनके लिए पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में पदार्थ तथा आत्मा दोनों में है, वो दोनों हैं, तो हर जगह पर वो व्याप्त हैं। और भगवान खुद कहते हैं कि सभी जगह पर वो व्याप्त हैं। और जो इस बात को समझ जाते हैं कि सभी के स्रोत है वो, सभी कुछ उनसे उद्भूत हुए हैं, तो वो पूर्ण हृदय से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। So in 5.18 also saying that the sloka Vidyavane Sampanne Brahmane Kavi Hastini Sunichaiva Swabhakecha Pandita Samadarshinaga. So the humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and a gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater outcast. So they see Pandita Samadha, they see everybody, everywhere. What they are seeing Krishna only. Pandita Samadha. Whether they are from the sages or like they are the learned Brahmana or a cow or an elephant or a dog or a dog eater, they see everywhere, like they are the everybody, they see the Paramatma residing in every one of them. अब आगे बताया गया कि हम देखते हैं गीता में बताया गया किस प्रकार से जो पंडित होते हैं वो सब जगह पर समदर्शी, सबको एक समान समझते हैं वो, और सभी योनियों में भी, और यहाँ तक कि पदार्थ और जो चेतन और जड़ है उसमें भी, हर जगह पर उनको स्मरण होता है। परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव वो हर जगह पर कर पाते हैं। ये चेतना की बड़ी परिपक्व अवस्था है। So Prabhupada write in that purport 5.18, a Krishna conscious person does not make any distinction between species or caste. The Brahmana and the outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species, but these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. This is due to their relationship to the Supreme. For the Supreme Lord, by his plenary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. तो प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं 5वें अध्याय के 18वें श्लोक के तात्पर्य में कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा कुत्ता, गाय तथा हाथी योनि के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। So Prabhupada further says that in the advanced stage of Krishna consciousness, one therefore makes no such distinctions. He sees only Krishna in everything. He sees everything. Since Krishna is both matter and spirit, the gigantic universal form comprising all material manifestations is also Krishna, and his pastimes in Vrindavana as 200 Shyama Sundara playing on a flute are those of the Supreme Personality of Godhead. Prabhupada ensures that, even though Krishna's universal form everywhere is Krishna, but specifically the 200 Shyama Sundara playing on a flute are those of the Supreme Personality of Godhead. प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि अतः कृष्ण भावना अमृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। ये बड़ी उच्च अवस्था है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त जगतों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो हर जगह कृष्ण को देख पाते। So
Why? One, if you are hearing this, to get the knowledge, the points, like the devotional service, Shravanam Kirtanam. The Shravanam is very, very important aspect of devotional service. So we have to hear about Krishna's pastimes, Krishna's Leela, Tattva. We have to always hear about Krishna in the association of devotees. तो ये चेतना का विकास भगवान कृष्ण के, जब हम शुद्ध भक्तों या भक्तों की, जब उनके भक्ति में युक्त जो ऐसे साधक भक्त भी हैं, उनके संग में जब हम लोग भगवान का गुणगान सुनते हैं, तब हमारी चेतना वो धीमे धीमे ऊपर की ओर उठना शुरू होती है. So Krishna himself says in 10.9, Machitta matkada prana podayantaha parasparam kadayantascha mam nityam dusyanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तो भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं. So Prabhupada write in that same purport, pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं. उनके मन कृष्ण के चरण कमलों में से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं. इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है. भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं. उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं. So we will read this purport, Prabhuji, continue. In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself. And in the mature stage, they are actually situated in love of God. Once situated in the transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in his abode. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them, there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. This devotional service is just like a seed, and if it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, that seed fructifies, just as the seed of a tree fructifies with regular watering. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyotir effulgence in the spiritual sky. In the spiritual sky also, the plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavana, the supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there.
fruits and flowers. That plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. This plant of devotional service is fully described in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 19. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as a fish cannot live without water. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. Shall I complete this also, bro? Just one more paragraph. Yes, Prabhu. The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees. As stated in the Bhagavatam itself, 12, 13, 18, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotee is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literature, just as a young boy and girl takes pleasure in association. Hare Krishna. आगे कहते हैं प्रभुपाद जी की भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद देते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और वो जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक वृक्ष क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर स्वर्ग में ब्रह्मज्योति तक नहीं पहुंच जाता, स्वर्ग में भी यह वृक्ष तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह वृक्ष भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। ज्यों ज्यों इस वृक्ष में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, त्यों त्यों भक्ति रूपी वृक्ष में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृतम के मध्य लीला के अध्याय 19 में भक्ति रूपी वृक्ष का विस्तार से वर्णन हुआ है। यहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण वृक्ष भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए में कहा है आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। Yes, Prabhuji. Just conclude, Prabhuji, just by sharing one instruction from Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur is giving advice to us. In the 24 hours, we have to divide into three, like 8 hours, 8 hours for devotional service, and 8 hours work, and 8 hours body.
we all know that, how much percentage we are utilizing in ourselves, and our aim is to achieve this 8 hour for devotional service, 8 hours for work, 8 hours for body. This let us all, I pray to all the assembled Vaishnavas, I should also increasing, most of my devotional 8 hours time is with body and work. It is going, I have to pull back and, to achieve that destination. And I request all the devotees, please pray for me, and we all should endeavor to achieve that standard set by Srila Bhaktivinoda Thakur. By saying this, I conclude this session. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो प्रभु जी बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर महाशय ने कहा है कि किस प्रकार से एक जो गृहस्थ भक्त हैं, उनको 8 घंटा जो अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य व्यवसाय जो भी 8 घंटे शरीर के लिए दीजिए, आपका उसमें सब कुछ शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, और 8 घंटे वो अपनी भक्ति में भजन में देना होगा। तो 24 घंटे को 3 भाग में विभाजित करिए, 8 काम के लिए, 8 अपने शरीर के लिए आवश्यकताओं के लिए, और 8 जो हैं वो अपने भजन कार्य में जो आत्मा की आवश्यकता है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आप सब प्रार्थना करें कि मैं भी और हम सब मिलकर के सब एक दूसरे को उत्साहित करें कि कम से कम अभी हम लोग ये 8 घंटे का प्लान करें हम लोग, कि कैसे, बाकी तो हमारा काम अच्छे से हो रहा है, लेकिन ये 8 घंटा जो भक्ति के लिए हमें विभाजित करना है, उसको कैसे हम लोग 8 घंटे में अपना जप, कीर्तन, श्रवण, भक्तों का संग, सेवा, कैसे उसको हम लोग करें और 8 घंटे सुनिश्चित करें, इसके बारे में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। थैंक यू प्रभु जी। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So with your permission, Prabhu ji, can we take some question, Prabhu, if they have any devotee? तो किसी की अगर कोई जिज्ञासा है आज के विषय वस्तु पर, तो अपने हाथ खड़े करें। And Prabhuji, your appearance is so nice in this video, actually. So wonderful. You're exactly in the Brahmanda. If you see at your back, Yes, what we read today, from yes, here the bhakti is going to the Krishna Loka, yes, and we can see the Lord is lying there. The Brahmaji is, the sprout is coming. Exactly, you are